Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित ऑनलाइन हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Manoj. Yes, the headlines first. Well, PM Mitra mega textile parks to be set up in 7 states, says Prime Minister Narendra Modi. Government plans to introduce production-linked incentive for specialty steel, and domestic benchmark indices close with gains. Sensex climbs 355 points. Nifty ends at 17,100. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क 7 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। विशेष प्रकार का इस्पात बनाने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी सरकार। और घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स 355 अंक कुचला, निफ्टी 17,100 पर हुआ बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। आज एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क 5F विजन के अनुरूप कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये टेक्सटाइल पार्क कपड़ा क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे। इसके साथ ही निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा लाखों लोगों के लिए नए रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि ये पार्क मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का एक बेहतरीन उदाहरण होगा। पुरी जी, हम इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। किसी जमाने में टेक्सटाइल सेक्टर प्रमुख कहले अर्थव्यवस्था को योगदान देने वाले क्षेत्रों में से एक था। एक ओर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होता था इसके माध्यम से, तो दूसरी ओर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में भी इसका महत्वपूर्ण इसकी भूमिका रहती थी। किस प्रकार के होंगे ये विशेष जो मेगा टेक्सटाइल पार्क होंगे वो, और किस तरह इससे पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलने में सहायता मिल सकेगी? मनोज जी, मैं आपका ध्यान इस तरह दिलाना चाहूंगा कि आज भी जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है। जीडीपी के टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रोजगार के नजरिए से तो खास तौर से अभी भी अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बाद सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर से मिलती है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर ना सिर्फ एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो बहुत बड़े पैमाने पर है उसमें एम्प्लॉयमेंट देता है, बल्कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, चाहे हैंडलूम्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, और जो एक रूरल और सेमी अर्बन सेंटर्स हैं, वहां भी टेक्सटाइल्स में बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट है। और गवर्नमेंट का काफी दिनों से ये एफर्ट रहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर को प्रोत्साहन दिया जाए, क्योंकि प्राइमरीली एग्रीकल्चर रिलेटेड यानी कॉटन ग्रोइंग एरिया जो है उनको सपोर्ट मिलती है, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है टेक्सटाइल की, उनको मिलती है। और हमने ये देखा है कि एक्सपोर्ट्स में भी टेक्सटाइल्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। भारत का पहले काफी बड़ा हिस्सा था, पिछले दिनों हमने देखा है कि एक्सपोर्ट्स में टेक्सटाइल्स में हम थोड़े पिछड़े हैं। कॉटन यार्न एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा थे, और जो मेडअप्स कहते थे जिसे हम फैब्रिक से, वो एक्सपोर्ट किया करते थे। वहां पर भारत को पिछले दिनों हमने देखा कि भारत थोड़ा पिछड़ा है इन कॉम्पिटिशन विद कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, वियतनाम, वहां पर काफी बढ़त रही। हम
एक नया आप कह सकते हैं इक्वेशन इवॉल्व हो रही है ग्लोबल इकोनॉमी में, और वो है कि जो चाइना जो बहुत बड़ा एक प्लेयर था टेक्सटाइल सेक्टर में, उसका रोल कम हो रहा है। उनका जो शेयर है ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड में वो पिछले दिनों कम हुआ है, और उस वैक्यूम को भरा है। जैसे जिन देशों को मैंने नाम लिया, बांग्लादेश, वियतनाम, ये जो नई देश हैं यहाँ पर हम ग्रोथ देख रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक एफर्ट है गवर्नमेंट के द्वारा कि इस सेक्टर को इंसेंटिवाइज किया जाए, ग्रोथ के लिए सपोर्ट किया जाए, जिससे कि हम अपना ग्लोबल ट्रेड में शेयर ग्रो कर सकें। डोमेस्टिक मार्केट आप देख रहे हैं कि वो तो अच्छी स्ट्रांग है, डिमांड वहां पर स्ट्रांग है। आई थिंक दिस एफर्ट इज मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स boosting exports from India and things commendable. Puneet ji, we all know that India's muslin was famous all over the world some years ago. We also can talk about the fact that when we talk of exports having lessened, it's not necessarily because Vietnam is coming up and Bangladesh is coming up with their improved export policies and exports. There is also another factor, and that is there is recession happening in Europe and the US. So maybe there is demand less. Otherwise, we feel very proud when we go abroad and go to the best of stores. We see a Make in India. Many of the textiles over there in the best of stores is made in India, and which one would feel very proud. So is that the factor that there is recession and in US and Europe also given a dent in the export of textiles? So, Lalima, you are right that to some extent, if you look at the trade data which has come day before yesterday, it shows that there's been a significant decline in exports as well as imports. And most of that export decline is actually coming from less demand in Europe and America to some extent. But Europe is definitely in a decline, and Europe was a big market for exports of Indian textiles. So you're right. To some extent, a weakness in textile sector is on account of global slowdown. But if I look at the market share that India had a few years back, even when China was pretty strong, we had a larger market share. And that market share to some extent has been given up to countries like Vietnam and Bangladesh, largely because they have cheaper labor. Mm-hmm. What happened was that it's not that we have it's a fault that India has. Mm-hmm. The fact is that Vietnam and Bangladesh are more, you can say more favorably disposed towards providing cheaper export to textiles, and that's why they have grown. Of course, what we can do is that because we have better infrastructure, we have larger domestic consumption support, India can also grow in that space. We can in fact beat China to some extent by taking away some market share. I think that is the objective of this policy, and we are well positioned for it. We know that the kind of infrastructure development which is taking place in India. So we have better ports, we have better shipping infrastructure. I think that also plays a very important role in pushing the sector. Right. We move on to the next news. Prime Minister Narendra Modi has lauded the persistent efforts being undertaken to make India's defence sector self-reliant. He remarked that the boost to self-reliance in defence sector also reaffirms faith in Indian talent. Mr. Modi said this while sharing a tweet by Defence Minister Rajnath Singh on the clearing of proposals worth 70,500 crore rupees and procurement worth over 2.71 lakh crore cleared in 2022-23. Punitji, we have now moved on. Defence sector was the core of Atmanirbhar Bharat, and we have moved on from not just making bulletproof jackets, but moved on to making huge equipment. In fact, on the 26th of January gone by, in the entire display of defence equipment was made in India. How does that? And also, yes, we are not just importing, but we are also thinking of exporting this, all these indigenous products. How does that affect our economy? Because definitely we'll be saving a lot of foreign exchange. So, Lalima, you're right. I mean, defense sector or defense industry actually plays many roles in supporting the domestic industry and in redefining where we stand. So while on one hand, if you look at the entire spectrum of policies by government, the focus is on now pushing the manufacturing sector. Mm-hmm. Until recently, we all believed that India did very well in growth of services sector. Yes. When it came to manufacturing, we had kind of Achilles heels and we did not grow to the potential that we had. The whole focus of industrial policy and government policy lately, if you can see, is on boosting and the manufacturing sector
and to redefine ourselves as also a manufacturing powerhouse. In that effort, the demand from the defense sector is extremely important. If you look at all the developed economies, if you look at USA, you look at UK, you look at France, Germany, even countries like China and Russia, the entire boost to the manufacturing of the industrial complex actually came from the defense sector. So in India now we are manufacturing fighter planes, we are manufacturing missiles, we are manufacturing drones. So high technology items are being manufactured, ships, submarines, aircraft carriers. So that is the cutting edge of manufacturing, I would say, manufacturing technology, and that is what we are pushing for. Yesterday, of course, government cleared another 70,500 crore worth of defense acquisitions by the government from domestic manufacturers, and this includes artillery guns and vehicles, fighting vehicles, so the whole spectrum of things. And therefore, I think it is extremely important. If going forward, I mean, if we are able to export also, and we have been exporting a little bit of defense equipment, but we will be able to export much of this defense equipment because effectively India is a much cheaper manufacturer of these goods. So we should be able to become quite a dominant player in this sector also globally. And I think another positive byproduct of this entire huge target of indigenously made equipment would be, defense equipment would be huge employment opportunities for our people, right? Yeah, absolutely. I mean, I think manufacturing, again, like I said earlier, has been the Achilles heel of our economy. This huge sector has remained at 14-15% contribution to the GDP. Services sector contributes 52-53%. Manufacturing contributing 15% cannot provide jobs in organized sector. And if we want to provide jobs to the organized labor, then the only way is that we grow the manufacturing sector. Yes. Well, moving on to another story, this time on steel. Well, the Ministry of Steel today signed MOUs with selected companies under the Production-Linked Incentive PLI scheme for specialty steel in New Delhi. Speaking on the occasion, Union Minister Jyotiraditya Scindia said India has become the epicenter of growth for the future of steel industry. He emphasized that India will play a seminal role in the next 2 decades in this sector. The minister termed the day an important day in the steel industry's history and its future. A total of 57 MOUs with 27 companies were signed during the event. Production-linked incentive scheme aims to boost domestic manufacturing and cut down import bills by encouraging local companies to set up or expand existing manufacturing units. Well, many years ago, traditionally speaking, India had a thumbs up as far as steel manufacturing was concerned. We had a fantastic technology, traditionally speaking, and now again that we are now going up in the manufacturing of steel, I think the wheels come a full circle, Puneet. So, Lalima, again, you're right in the sense that India was a major player in global steel industry many decades back, actually, and then we fell back. And in fact, China just overtook everybody. It's not just India. They kind of flooded the whole world with the Chinese steel because of the massive capacities that they had. Fortunately, now we have a few companies in India which have global scale production of steel. So as far as primary steel is concerned, we are doing okay. We have capacities, we have raw materials that are available, and now we have manufacturers who are able to produce large quantities of primary steel. What we have been lacking is specialized technology for making high quality steel. In fact, you'll be surprised that until I think few years back, we were still importing all the special steel, and we did not have enough manufacturers for manufacturing this value-added item, which is required for high-end items like defense production and high-end machinery. So, fortunately, now the PLI scheme, which has been introduced for specialty steel sector, it will be very, very effective because, see, specialty steel companies don't have to be very large-size companies. They don't have to be producing 50 million tons of steel. I mean, you can do 1 million tons, 2 million tons of steel producers can also produce specialty steel which are required by special industry. So I think it is very, very targeted that this PLI scheme has been provided for specialty steel and not for general steel industry. So I think it's been done very intelligently. पुनीत जी, यहाँ पर हम आम श्रोताओं के लिए जो तकनीकी शब्दावली को नहीं समझ सकते, उनके लिए समझना चाहेंगे। आपने हालांकि संकेत दिया है कि ये विशेष प्रकार के इस्पात होंगे। कहाँ ये विशेष इस्पात इस्तेमाल किए जा सकेंगे और किस रूप में छोटे उद्यमी भी इस क्षेत्र में उतर के लाभ पा सकते हैं सरकार की इस योजना का?
बिल्कुल मनोज जी, आपने सही कहा कि जो स्पेशलिटी स्टील यानी जो बहुत हाई स्पेसिफिक एप्लीकेशंस है, जैसे मान लीजिए आप हवाई जहाज के लिए स्टील बनाना चाहते हैं जो फाइटर पायलट्स यूज होते हैं, या आप शिप्स के लिए यूज करना चाहते हैं, या बहुत हाई एंड मशीन्स हैं या ड्रिलिंग इक्विपमेंट है जो हाई सीज में यूज होती है, इन सभी एप्लीकेशंस के लिए और इस प्रकार की जो खास एप्लीकेशंस हैं जहां खास तरह की मशीनरी इस्तेमाल होती है, वहां पर स्टील की क्वालिटी जो है वो फर्क होती है नॉर्मल स्टील से। तो वहां हमें जरूरत है बहुत हाई टेक्नोलॉजी की कि हम उस प्रकार का स्टील प्रोड्यूस कर सकें। और ये बात सही है कि कुछ रिसेंट अगर आप पीछे कुछ वर्षों जाएं तो हमारे पास वो तकनीक भी नहीं थी और हम ये इंपोर्ट किया करते थे। इनफैक्ट जो हमारे इंपोर्ट्स होते थे स्टील के, वो ज्यादातर स्पेशल स्टील के ही होते थे और काफी हम उसमें पैसा खर्च करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने कहा कि जो बड़ी कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा कैपेसिटीज है, 50 मिलियन टन है, उससे ज्यादा कैपेसिटी है, वो स्पेशलिटी स्टील पर फोकस नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत बड़ी इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर काम कर रहे हैं। स्पेशलिटीज की जो कंपनी होती है नॉर्मली वो छोटे साइज की कंपनीज होती है, वो 1 मिलियन टन या 2 मिलियन टन का कैपेसिटी होती है और वो कंपनीज उस नई टेक्निक से वो बेहतर स्टील बना पाती है। तो इसलिए जो पीएलआई स्कीम है, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इंट्रोड्यूस की है, वो इन छोटी कंपनीज के ऊपर ज्यादा एप्लीकेबल होगी या उनके लिए ही वो कारगर होगी। तो इसलिए मैंने कहा कि जो पीएलआई स्कीम है वो एक बहुत इंटेलिजेंट ढंग से उसको टारगेट किया गया है और मुझे लगता है काफी एक असरदार इसका हम देखेंगे असर आने वाले टाइम पे। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सरकार ने आज आईडीबीआई बैंक के विनिवेश को स्थगित करने की संभावना वाली मीडिया रिपोर्टों को भ्रामक, अटकलबाजी और निराधार बताया है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव ने एक ट्वीट में कहा कि कई प्रक्रियाओं के बाद विनिवेश का काम सही दिशा में चल रहा है। आइए अब चलें शेयर बाजार की ओर। पहले घरेलू शेयर बाजार। घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे सत्र में आज लिवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक आधी फीसदी से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 355 अंक यानी 0.6% बढ़कर 57,990 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 114 अंक यानी 0.67% लाभ के साथ 17,100 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन भी अच्छा रहा। इनके शेयरों की लिवाली भी तेज रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.29% बढ़त के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.69% की वृद्धि हुई। At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange climbed 355 points or 0.62% to close at 57,990 today. Nifty at the National Stock Exchange advanced 114 points or 0.67% to end at around 17,100. In the broader market at the BSE, the mid-cap index ended 0.29% up and the small-cap index rose 0.69%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, 21 rose while 9 fell. HCL Tech gained 3.6%, Ultratech Cement climbed 2.5%, and Nestle India added 2.3%. On the other hand, ITC and Maruti both declined 1.5%, NTPC fell 1.3%, and Asian Paints reduced by 1.2%. In sectoral indices at the BSE, 17 sectors logged gains, while 3 witnessed losses. Realty sector gained 3.2%, metal index added 2.4%, and commodities rose 1.4%. On the other side, utilities fell 0.5%, financial services slipped 0.4%, and FMCG declined 0.3%. The overall market breadth was positive as shares of 2,047 companies rose, while those of 1,454 companies fell. A total of 133 companies remained unchanged. So, Puneet ji, after the COVID, we had touched 60K when the entire world was reeling under so-called post-COVID recession or what have you. But it's also relative. Now when we see Sensex at about 57,000 plus, the million-dollar question would be, is this the right time to invest or not to invest in shares? So, Lalima, it is always a very difficult question to answer because it has answers which are different for different people with different risk appetites, with different risk investment horizons. So, keeping that aside for the moment, I think the markets right now are very volatile.
We have seen that volatility in the last 1 month. In fact, this week too, we saw markets go up and go down. And today itself, while end of the day we saw the markets going higher, the truth is that they opened higher, then they went into red, and then they went up again. And so it was a really volatile day. And I think investors who have short-term horizon and low risk appetite, they should stay away from the market for the time being. They should let the market stabilize at least over the next couple of weeks, maybe next month or so, and then they can think about investing in the markets. However, those who have long-term horizons and those who have slightly higher risk appetite, I think it is good time for them to start investing in stocks, because my own personal opinion is that much of this pain in the markets and the volatility and uncertainty is going to be behind us within next few days. And post the US Fed decision, which is due next week, I think the markets will stabilize. And after that, you can start making regular investments in again, I would say, in fundamentally sound stocks. This is not the time for speculative positions. So I think this market is good for long-term investors right now, and short-term investors should definitely avoid it. पुनीत जी, आपके साथ शुक्रवार को होने का सबसे बड़ा लाभ हमें ये होता है कि पूरे सप्ताह की कारोबारी गतिविधियों का हम आकलन कर सकें, जायजा ले सकें, और खास तौर से इस बार जबकि लगातार 5 सत्रों में हमने गिरावट का दौर देखा, उसके बाद कल से और आज दोनों दिन हमने लिवाली देखी, तो बाजार में जो पिछली गिरावट थी उसे हम बाह्य कारण यानी विदेशी जो कह लें विभिन्न घटनाएं हुई उनका परिणाम माने, और अब की जो लिवाली है उसके पीछे क्या कारक समझे जिससे बाजार के रुख में ये बदलाव आया है? मनोज, देखिए, प्राइमरी रीजन अभी मार्केट को जो ड्राइव कर रहे हैं वो तो ग्लोबल ही है। जो भी हम अमेरिका में आप कह सकते हैं बैंकिंग क्राइसिस है, या जो मॉनेटरी पॉलिसी है, या इंटरेस्ट रेट का जो साइकिल है, वही मार्केट सेंटिमेंट को अभी ड्राइव कर रहा है। पर जो लॉन्ग टर्म हम जब देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि डोमेस्टिक फैक्टर्स जो हैं, यानी हमारी ग्रोथ क्या है, कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो एक असर डालती हैं स्टॉक सिलेक्शन पर कि किस प्रकार की कंपनियों में हम निवेश करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि शॉर्ट टर्म में अभी आने वाले कुछ समय तक ग्लोबल फैक्टर्स डोमिनेट करेंगे। तो इसीलिए मैंने जिक्र किया अगले सप्ताह जो यूएस फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग है उसका जिक्र किया मैंने, क्योंकि वो एक फैक्टर है अभी जो मार्केट्स को वोलेटाइल रख सकता है, और उस मीटिंग के बाद शायद स्टेबिलिटी आएगी। इसी प्रकार से जो बैंकिंग वहां पर क्राइसिस चल रहा है वो भी मेरा अनुमान है कि अगले 2 सप्ताह में वो स्टेबलाइज हो जाएगा, पर वो 2 सप्ताह तक जरूर कुछ असर डालता रहेगा बाजारों के ऊपर। तो अभी ग्लोबल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मार्केट्स को। डोमेस्टिक फैक्टर्स टू सम एक्सटेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि अभी वी हैव टू कीप एन आवर आईज ऑन द ग्लोबल डेवलपमेंट्स राइट नाउ, and then choose a strategy sometime next month. And Puneet, looking at the sectoral indices, we find that the realities sector gained 3.2% and metal index added 2.4%, commodities up 1.4%. How would you comment on that? So as far as realty sector is concerned, actually one of the large realty companies that did very well today, largely because of reports that they were able to sell very large number of apartments, within 24 hours, which are all $1 million apartments. It showed the resilience of Indian economy. I mean, if anything else, it just showed how strong the demand is for high-end apartments in India, and the financial conditions remain quite robust. I think that was a reaction to that. The stock reacted obviously, and the whole sector also reacted. If you look at the way metal sector stocks behave today, it was some kind of a relief, because these stocks had been under a lot of selling pressure lately, again because of the fears of recession. And the moment that kind of receded, these stocks, because they are good value buys in metal space, they kind of rebounded on value buying. So right now, this is the kind of move we see. We see these stocks go up and go down by 3-4% every day. And that's why I said that if you're a long-term investor, you can buy on the dips and you'll be quite happy over the next 6 months. But if you're a short-term trader, it's going to be quite painful. And the fact that India is investing so hugely in infrastructure, that would put the metal index in a stable position. Can we say that? Lalima, see, I'll tell you honestly, it is of course long-term story because very strong. Again, that's why I would say the large primary steel producers, they're still doing okay, although this quarter they may not report very good numbers. But
the truth is that in the short term, the market will not look at long-term story. They're not looking at what will happen 2 years or 3 years from now in terms of demand. Markets usually react in the short term. They'll react to news developments which are immediate, and also news fund flows. We know that FIIs have been very big sellers in India, and they continue to be sellers. Even today, they have sold stocks worth more than almost 2,000 crores. So we are seeing a lot of selling pressure from foreign investors right now, and those are the more dominant reasons in the immediate term. And longer term, of course, we think things will be much better. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 19 पैसे मजबूत हुआ, 82 रुपये 55 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.26% घटकर 104.15 पर चल रहा था। पुरी जी, यहां रुपए के प्रदर्शन पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, और जो विकासशील देशों की जो मुद्राएं हैं उसमें अपना रुपया कहां टिक रहा है, और जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें रुपए के प्रदर्शन पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? मनोज जी, देखिए, अगर मैं रुपए को ईयर टू डेट यानी जनवरी से लेकर अभी तक का अगर कंपैरिजन करता हूं तो रुपए का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। बाकी जो एशियन करेंसीज हैं या इमर्जिंग मार्केट करेंसी है, वहां पर हमने एप्रिसिएशन देखा है पिछले 3 महीने में। रुपया हालांकि वही स्टेबल रहा है, करीब 82 के आसपास आप देखेंगे, 81, 82 के आसपास वो एक स्टेबिलिटी रही है। पर यदि हम लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव लेते हैं, देखते हैं पिछले 1 वर्ष में या 2 वर्ष में परफॉर्मेंस देखते हैं, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। मुझे लगता है कि रुपए को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी है कि स्टेबल रखा जाए। वो बहुत ज्यादा बढ़त या उसमें घटाव नहीं देखना चाहते। रुपया स्टेबल अगर रहता है तो मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो तभी करती है जब करेंसी जो है वो आपकी स्टेबल होगी। जी, आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज लिवाली तेज रही। हांगकांग का हिंग सेंग सूचकांक 1.6% लाभ में रहा। जापान के निक्केई 225 में 1.2% की वृद्धि हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.9%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स दोनों 0.7% लाभ के साथ बंद हुए। गौरतलब है कि चीन के केंद्रीय बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने लगभग सभी बैंकों के लिए रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो को 0.25% कर दिया है, जो 27 मार्च से प्रभावी होगा। यूरोपीय जोन की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां लिवाली दिख रही थी। अंतर्देशीय कारोबार में फ्रांस का कैक 40 0.1% ऊपर चल रहा था। जर्मनी के डेक्स में 0.4% की वृद्धि थी, और लंदन का FTSE 100 0.6% लाभ के साथ कारोबार कर रहा था। Look at the US markets now, where the largest lenders came for the rescue of First Republic Bank, which led the US market to close positive. The Dow Jones Industrial Average gained 1.2%, the S&P 500 rose 1.8%, and the Nasdaq Composite Index climbed 2.5%. A look at the oil prices now. Well, oil prices fall to its weakest since last December. In intraday trade, Brent crude was trading at around $74.85 per barrel, while WTI crude price was at $68.70 per barrel when reports last came in. और अंत में चलें सराफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 365 रुपये बढ़कर 58,370 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चल रहा था। उधर मई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 715 रुपये बढ़त के साथ 67,250 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ओर चलें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य थोड़ा सा मजबूत था, $1,955 प्रति औंस पर था। चांदी भी थोड़ी सी बढ़त के साथ $22.55 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज। I think the closing comment could be that gold will never lose its sheen, never ever in India. जी, बस यहीं पर हम विदा लेना चाहेंगे मुख्य समाचारों के साथ। जी, and now before we close, here's a reminder of the headlines. PM Mitra mega textile parks to be set up in 7 states, says Prime Minister Narendra Modi. Government plans to introduce production-linked incentive for specialty steel, and domestic benchmark indices close with gains. Sensex climbs 355 points. Nifty ends at 17,100. And with that, we end this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Manoj Pathak, bidding adieu. Namaskar. Market Mantra.